Welcome in MBM Classes. Today from exercise 3.5 I will explain you about question number 3. Here solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method. So already we have done this substitution method, so I will explain you the same thing with cross multiplication method. Okay, and here equations are 8x plus 5y equal to 9, 3x plus 2y is equals to 4. So let me write in this in copy and then I will explain you. Now see, equations are 8x plus 5y is equals to 9 and 3x plus 2y equal to 4. And we have to do these solving these equation by cross multiplication method. And for this we need to write this 9 and 4 towards left hand side. So I will write this equation as 8x plus 5y minus 9 is equals to 0. Let this equation be number 1. And the second equation is 3x plus 2y minus 4 is equals to 0. It will be equation number 2. So write all the coefficients. So here we have to write here a1 is equals to 8, b1 is equals to 5 and c1 equal to minus 9. Similarly, for the second equation, a2 is equals to 3 because it is coefficient of x, b2 equal to 2 and c2 is equals to minus 4. And I told you how to write. We have to write x, and when you are going to take coefficient of finding value of x, we have to leave the coefficient of x. So we will write 5, 2, minus 9, minus 4 is equals to for y. When you will find out y, don't take the coefficient of y. Remaining as it is, you are going to take minus 9, minus 4 and after that 8 and 3 is equals to 1. Then constant term you hide it and take rest all like coefficient of x and coefficient of y. Then cross multiplication from the first column top to bottom and from top down to top. Similarly top to bottom from first column and then like this. You have to multiply multiply these two. So we'll write x. 5 into minus 4 will be minus 20, minus sign, and when you multiply these 2 into minus 9, it is minus 18 equal to y upon minus 9 into 3 is minus 27, 1 minus sign because of the formula, then minus 4 into 8 is minus 32 is equals to 1 upon 8 to the 16 minus 3 5 is 15. Here again x upon minus 20 plus 18 is equals to y upon minus 27 plus 32 is equals to 1 upon 1 means 1. So x upon minus 2 y upon 5 is equal to 1. Take these two, equate it. So x by minus 2 is equal to 1. So x is equals to minus 2. When you are going to equate these two, then y by 5 is equal to 1. Thus y is equals to 5. Therefore, the solution is x equal to minus 2 and y equal to 5. Now, according to the question number 4 of exercise 3.5, form the pair of linear equation. Once again, please read this word properly. It is not from, it is form. That means you have to make the equation. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. It means out of the 3 algebraic method you can solve by any method. And these are word problems. So first of all you have to form equation and then only you will solve. So rest 2 method I already explained. Even I explained cross multiplication method also. So these 5 question I will solve with the help of cross multiplication. So let us start reading of this question. Here I am going to read. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, where a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day.
So after reading this one, we need to make two equations. For that, we need to suppose that let x be the fixed charge or y be the fixed charge, and for the similar way, for the cost of the food per day be x or y, whatever you are going to take. So here I am going to write the equation according to the question. So here let x be the fixed charge. The fixed charge. After that, y be the charge for food per day. Then, according to question, we have first equation x plus 26 days, it was 20 days, sorry, x plus 20y, it is equals to 1000 rupees. So should we write x plus 20y minus 1000 is equals to 0? This will be the first equation. Also x, this one is for student A, for student A, and this is for student B. X plus 26y is equals to 1180. It was given as 1180, that means 1180 rupees. So should we write like this? 1180 should shift from right to left, so it becomes equal to 0. And let us suppose this equation number 2. And you know very well how to write all these things. So once again, we have to first of all write always what is A1, A2, B1, B2. So A1 will be 1, A2 is 1, B1 20, B2 26, C1 minus 1000, C2 minus 1180, and then formula for cross multiplication. So I will write here cross multiplication method. So we need to write first of all x. Here according to the question it should be B1, B2, C1, C2, here y. Then we should write C1, C2, A1, A2, and for the first here 1, A1, A2, B1, B2. Now substitute all the values. After that you have to multiply like this. Got it? In every question you write the formula. It is better because you will learn how to write and how to do. Then there will be very less chance to miss any mistake. So x, here what is B1? B1 was 20, it is 26. Here it is minus 1000, here it is minus 1180. For y it is C1 means minus 1000, minus 1180. Then A1 was 1 and 1. Constant 1, 1, 20 and 26. Now here x, when you multiply these two, it is equals to 0, 0, 2 8 is 16, 6, 1, 2 1 0, 2, 3, like this. Then minus of minus 2600, sorry, when you multiply these two, is equals to y upon, when you multiply these two, you will get minus 1000, minus, when you multiply these two, it is minus 1180. Is equals to 1 upon, again multiply these two and subtract this one. So 26 minus 20. Here x upon minus 2, 3, 6, 0 plus 26,000, y upon 1000 with negative sign plus 1180 is equals to 1 upon 6. So it is you are going to subtract, so it is equals to 2400, okay, with plus sign. 2400 is equals to y upon, here it is 180, 1180 minus 1000, it is equals to 1 by 6. Now solve these two. After writing like this, you will get x is equals to 2400 upon 6 means 400 rupees. Similarly, when you will take these two, you will write y upon 180 is equals to 1 upon 6. So y is equals to
180 by 6 means rupees 130. So answer will be x equal to 400 and y equal to rupees 130. You have to write rupees 130 and this is rupees 400. So this will be the charge for fixed and this one charge for food per day as rupees 130. Welcome back in MBM classes. Today I am going to start question number 4, second part of exercise 3.5, in which again I am going to make equation and after that I will show how to solve by cross multiplication method. So here a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and what is numerator we don't know, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Always remember, for fraction we need to write something as numerator and something as denominator. So what are the variables you are going to take for this one? It's up to you whether you want to take xy or ab, whatever it is. I'm going to take here numerator as x and denominator y, and then I will show what is equation and how to simplify. Clear? So here we have to write let x be numerator and y be denominator. Thus the fraction becomes x upon y. The fraction is x upon y. So according to the condition or according to question, first condition, it has given the fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. That means numerator was x. When you subtract 1 from the numerator, denominator as it is, no need to change any denominator by adding or subtracting, it becomes 1 by 3. This is the condition. But here this is not the standard form of the general equation. We are going to write in the standard form or general equation with two variables. So do the cross multiplication. So it would be 3 times of x minus 1 is equals to y into 1. That means 3x minus 3 is equals to y. Or you can write 3x minus y minus 3 is equals to 0. This is the equation number 1. Shift y from right side to left side. ये general equation में लिखना जरूरी होता है. Similarly, for the second case, I will write here also the second fraction. The fraction becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. मतलब numerator में कोई change नहीं है. Denominator y था, उसमें 8 add करो, that is equals to 1 by 4. ये उन्होंने condition दी थी. अब आप इसको cross multiply कर लीजिए और वापस आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो ये आपके पास सारे राइट साइड वाले टर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, इक्वल टू 0 हो गया. तो ये इक्वेशन नंबर 2. अब आप वापस a1 b1 c1 t सब लिख लीजिए. कोफिशिएंट लिखना बहुत जरूरी होता है. इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि अगर आपसे एक आध भी साइन स्किप हो गया तो आप एटलीस्ट यही देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले. So a1 is equals to 3. This is the coefficient of x. a2 is 4 because the coefficient of x in second equation is 4. So b1 is equals to minus 1. See? And here b2 equal to minus 1. c1 equal to minus 3 and c2 equal to minus 8. Again, write the formula as you know very well. For x, we are not supposed to write any part of a. We have to write only b and c. So b1, b2, c1, c2. It is equals to y upon y के लिए b नहीं लेते हैं तो c1, c2, a1, a2 is equals to 1 में कांस्टेंट में c नहीं लेते हैं तो a1, a2, b1, b2. ये आपको बार बार लिख के याद रखना पड़ेगा. कोई भी कोफिशिएंट को मिसप्लेस नहीं करेंगे आप. फिर आपने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू को पुट किया. सो इट इज -1, -1, -3, -8. सिमिलरली यहाँ पे -3, -8, 3 and 4 कांस्टेंट के लिए 3, 4, -1, -1. अब आपको मैं सिर्फ ऐसे एरो डाल के दिखाऊंगी. अब आप खुद देखिए इसमें क्या करा है. नेक्स्ट अगले स्टेप में x ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो इट इज 8 माइनस ऑफ 3 1 3. ये दोनों नेगेटिव थे इसीलिए पॉजिटिव हो गया. यहाँ पे y, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई किया -12. एक माइनस फॉर्मूला -8 into 3 is -24 इक्वल टू 1 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हुए -3 फिर ये -4. x अपॉन ये आ गया 5.
y अपॉन ये -12 प्लस 24 हो रहा है, ये 1 अपॉन -3 प्लस 4, तो x बाय 5, y बाय 12 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, और ये आ गया 1 अपॉन 1। अगेन इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x बाय 5 equal to 1, hence x is equals to 5. And when you equate these two, y by 12 is equals to 1, hence y is equals to 12. तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा इधर, फ्रैक्शन is equals to 5 upon 12, ये 5 है, 5 upon 12. This is the answer. Now for the fourth question, third part, I'm reading here as Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला यश को 40 मार्क्स मिले, कब, जब उसके करेक्ट आंसर्स के लिए 3 मार्क्स उसको दिए गए और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क को डिडक्ट किया। और सेकेंड कंडीशन में उनसे कहा था अगर उसको राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए गए और रॉन्ग आंसर्स के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट किए तब उसको 50 मार्क्स मिलते। तो फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो हमें नहीं पता कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स तो पता है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मार्क्स पता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट वाले कितने थे और इनकरेक्ट कितने थे वो पता ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल को सपोज करना पड़ेगा और फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन बनानी है और फिर हमें सॉल्व करना है। तो याद करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन में 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप सब लोगों को मालूम होगा करेक्ट आंसर्स के लिए हमें पॉजिटिव साइन यूज करना है और रॉन्ग आंसर के लिए हमें नेगेटिव साइन यूज करना है। पर जब वेरिएबल आप यूज करेंगे एक्स और वाई, उस टाइम पे नहीं लगाना, इक्वेशन को लिखने के टाइम पे साइन को ध्यान में रखना है कि वो करेक्ट आंसर्स के लिए है या रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो हियर वी हैव टू राइट लेट नंबर ऑफ correct answers, number of correct answers is equals to x and number of wrong answer or incorrect, you can write wrong answers as y. So according to question, अब उन्होंने क्या बोला था फर्स्ट केस में, उसको 40 मार्क्स टोटल मिले थे और 3 मार्क्स उसके राइट आंसर्स के लिए थे। तो 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अगर एक आपके पास करेक्ट आंसर है उसके लिए 3 मार्क्स देते हैं तो x के लिए कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का रॉन्ग होने से आपके पास 1 मार्क्स रिड्यूस होता है तो y के लिए कितना होगा, y इंटू 1 होगा। तो माइनस यहाँ पे इसलिए हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि उसका एक आंसर उसको रॉन्ग था, उसका एक आंसर उसको रॉन्ग के लिए उससे डिडक्ट किया था। 3 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स के लिए दिए थे, 1 मार्क उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए डिडक्ट किया, तब जाके उसको टोटल मार्क्स मिल रहे थे 4040। दिस इज द इक्वेशन। शुड आई राइट लाइक दिस, 3x minus y minus 40 is equals to 0? This would be 1, is it? Also सेकेंड कंडीशन में उनसे कहा था कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर्स के लिए तो 4x और उसको 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर्स के लिए डिडक्ट करते, तो रॉन्ग की जैसी बात होगी तो माइनस साइन लगेगा और 2y इज इक्वल्स टू उसको 50 मार्क्स मिल रहे थे। 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेट करके 0 से ही लिखना, उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने में इजी रहता है, साइन मिस्टेक नहीं होती है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन विल राइट व्हाट इज a1 a2, a1 is 3, a2 is 4, b1 is -1, b2 is -2,
C1 is -40, C2 is -50। अब मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला वी नो फॉर एक्स के लिए हमें ए नहीं लिखना होता है, तो B1 B2 से स्टार्ट करते हैं और C1 C2 सेकेंड कॉलम होता है। फिर y के लिए हम b नहीं लिखते हैं, तो स्टार्ट करना है C1 C2 से और यहाँ पर आएगा A1 A2। फिर कांस्टेंट के लिए c नहीं लिखा जाता है, A1 A2 B1 B2। हर बार हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला पहले लिखिएगा आप। तो x B1 है -1 -2 -40 -50। y के लिए भी पूरे वैल्यूज लिख दीजिए आप, -40 -50, A1 A2 में 3 and 4। कांस्टेंट के लिए 3 4 -1 -2। फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे की तरफ और बाद में नीचे से ऊपर की साइड में एरो डाल के शो कर देना। तो x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 80। याद रखिए दोनों माइनस के हैं इसीलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इज इक्वल टू y अपॉन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -160 -150 विद माइनस साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये दोनों -6 -4। ये पूरा लिखना है आपको। इसके बाद x अपॉन ये आ जाएगा आपके पास -30, ये होगा y अपॉन -160 प्लस 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 प्लस 4। x बाय -30, y अपॉन -10, 1 अपॉन -2। देखिए तीनों नेगेटिव आ गए पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। तो फिर आप लिखेंगे x अपॉन -30 इक्वल टू 1 अपॉन -2। जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 30/2 मीन्स 15 आ गया। फिर यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को करके दिखाते हैं सॉल्व तो आएगा y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। तो y इज इक्वल टू -10 अपॉन -2 कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो x इज इक्वल टू 15 करेक्ट आंसर्स थे ये, और y इज इक्वल टू 5 जो थे वो इनकरेक्ट आंसर्स है। So we write total number of questions is equals to 15 plus 5, that means 20। 15 करेक्ट थे और 5 इनकरेक्ट थे, पर दोनों को मिला के कितना हुआ 20 क्वेश्चंस। So this is the final answer।